हाँ, तो ऐसा ही कुछ. Sorry, now 1 second. I need to ask you a question here before I forget. It's a very subtle question. This very essence that all of us are malleable is also loss of control, because it's grief, and it's also brought you to a place where you no longer know what you are sure about, right? So यहाँ से वो जो no, there is this also the sense of severe grasping at control again. कि यार मैं तो यही हूँ, मतलब पागल तो नहीं हो रहा कहीं मैं, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर और फॉर्म जिसको तुम लेकर चले हो कि ठोस है, अब वो टूट रहा है. तो डिडंट यू फील दैट फियर? मतलब यू कंटिन्यू व्हाट यू वाज डूइंग, बट आई वांट टू आस्क यू, फियर और लैक ऑफ कंट्रोल के साथ कैसा डील किया आपने? तो ये जी रेकरिंग चीज है. नॉट दैट आई एम सेइंग कि मैं उस तरह हो गया, उधर उधर चला गया. मैं आई एम तो नॉट इवन क्लेमिंग दैट मैं तटस्थ हो गया. अब आई सी द एसेंस इन ऑल, इवन आई व्हेन आई एम अ तटस्थ. मैं तो कह रहा हूँ कि दिस कम्स एंड गोस, दिस फीलिंग. देयर आर नाइट्स वेयर एंजाइटी क्रीप्स इन एंड I tend to grasp things, मतलब कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ तो आए पकड़ में. तो फिर उस समय मतलब I would say कि that anxiety alleviates when I think about, oh ठीक है, मतलब I am in hands of all good, something which is all good, it cannot be evil. एंड अब क्योंकि मेरे से हो भी नहीं रहा कंट्रोल, तो मैंने कहा ठीक है यार, जो है वो है, वो संभाल लेगा अब जो भी है. हाँ, एक्सेप्टेंस मतलब है तो है. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग all good or all pure which subsumes or controls or whatever. Yeah. So continue that to your how you arrived at that othering part. This was a sub question. You were reaching. So once you reached a point where you joined your new college, you had already presented your master's work to them, and then how did that jump to othering happen? What kind of, and you started talking about your beliefs. Yeah. So basically abhi still my work is in the formative stages. It's just hypothesis that I have given, and that I am giving in hypothesis, और मेरा पूरा argumentation भी इसी direction में जा रहा है कि where I use Foucault's work a lot and Judith Butler का, where I use gender being non-essential and it being a performative. So I tend to use that work कि if and I tend to extrapolate gender को to self, where I argue it further कि a self is non-essential, and non-essential in the sense कि there is no such thing as self. Everything is performances, everything is accrued history, knowledge, an amalgamation of whatever the culture is. मतलब वो मैं जैसे मैंने बोला भी कि मैं nothing of me is original, वैसे nothing of me is original. Okay, original is a good word, I guess. Maybe stationary is what you mean, because it's kind of evolving all the time. Is that what you mean? The self is always evolving. Not in that sense. So for example, if I'm taking history, I take it for granted that this is the history that I am tied to. Personal और बड़ा अलग चीज है. But personal history पकड़ो कि मेरे दादाजी ये थे, मेरे दादाजी के दादाजी ये थे, so on so forth. तो ये है, ये है, ये है. But my question to you is कि वहाँ पे वो evolving है. I'll give you one little example. My Nana said things about my family, as in my Dada's family, which did not match what my Dada said about our family. And I was far too young. True. Certain stories, I only have to take with a pinch of salt because those are such radically dramatic
opposing, not opposing necessarily, but absolute parallel paths that I could not seem to match के ये वाला story अगर मेरा दादाजी का डैडी और दादा ऐसे थे तो मेरे नाना ने जो ये बताया है वो ऐसे थे तो ये कैसा पॉसिबल है. So on one hand, I'm seemingly that we came from Pakistan a little more richer than what I presume, because there was some essence of comparative. जो उस टाइम के लोग आए थे उससे ज्यादा एक रूम हमारे पास था, तो शायद दो रूम कैसे आ गए हमारे पास, सबको तो एक था. So that is something that kind of made sense when he said, you know, we had this property, so we got 2 rooms in return as refugees in India. But my nana ended up saying कि तुम्हारे दादाजी के डैडी तो इतने poor थे कि used to carry stuff on his head and sell. तो अब ये दोनों चीज तो मेरे अभी वो reconcile नहीं हो रही, but अभी वो दोनों person भी नहीं है और जो मतलब जिसकी history है वो तो है ही नहीं. But when this information came, it became a newer set of circumstances and it became fluid. This is grief. So this idea of not being stationary, is this what you meant when you're saying is being fed in? Because new information is being fed in. This formation called Bunty as of right now is only being to an extent, created. yes. थोड़े हद तक, is that what you mean? To an extent, yes. To an extent, yes. कि विभिन्न, हाँ, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया बहुत ही सुंदर. मेरे को ऐसे एक और आया कि जैसे कितनी बार मैंने अपने पिताजी को खुद को देखा है, पिताजी को देखा है मैंने कि कभी ऐसे लगते हैं तो फिर एक धारणा बन जाती है कि अच्छा यार ये तो ऐसे हैं. फिर एक मोमेंट रहता है कि मैं इनको देखता हूँ बिल्कुल और अलग ही पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है कि अरे ये तो ऐसे भी हैं. तो क्या ये सिर्फ ऐसे हैं या ऐसे हैं? तो ये तो जैसे एक तेलुगु में एक गाना है, इंतकी नुव्वु वकडिवा वंदवा इंतकी नुव्वु एवरकी अंदवा. मतलब क्या आप एक हो या 100 हो, या आप, हाँ. तो निदा फाजली का भी एक है ना कि हर जिस किसी को भी देखना कई बार देखना, हर किसी में है हजारों आदमी, ऐसा कुछ. मतलब तो फिर वही टू क्वेश्चन सेल्फ इटसेल्फ बिकेम माय गोल कि भाई क्या है, क्या ये सेल्फ, मतलब इतने रिजिड आइडेंटिटीज के साथ हाउ डू वी मूव. सो आई गेस मतलब योर प्रोब बिकेम रेलेवेंट देयर, आई गेस. तो आई एम लुकिंग एट दैट एस्पेक्ट एज वेल. मतलब यस, मतलब that has influenced my line of inquiry in a way. Yes, I'm also seeing कि जैसे ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से, ये मैं कॉलेज में मैं डीयू में फिजिक्स तब कम पढ़ने लग गया था, लिटरेचर ज्यादा पढ़ने लग गया था. तो ये मैं लाइब्रेरी को दोष भी दूंगा और एक तरीके से उसको अप्रिशिएट भी करूंगा कि that access to books, because I was not a reader back then, मतलब before graduation. So then I was like the whole book wala world opened to me, and I was reading Gabriel Garcia Marquez, I was reading ऐसे समझ भी नहीं आ रहा था मेरे को. जॉन पॉल सार्ट्रे भी मैंने उठा लिया था only to show off or something. मैं देख रहा वो existence is meaningless ये सब. So and the myth of Sisyphus, ये सब ऐसे पढ़ के एक सेल्फ इंड्यूस्ड ड्रेड वाले स्टेट में भी आ गया था मैं कि oh fuck, if it is not meaning, if it is meaningless, then what. वो एंजाइटी क्रीप इन हो रहा था. देन फिर एक तरीके से ग्रेस टाइप कि ऐसे कुछ भी मान लो, किसी तरीके से कृष्ण ही आविर्भूत हुए कि अरे if this is all meaningless, it's better na, you can create your own meaning, then you are the creator, you are the god itself. Ki go on, create meaning, make associations that make sense to you, play flute, do this. So that avenue also opened. तो उस सेंस में also I was मैं othering देख रहा था, मतलब कि if everything is a performative, if everything is a performance, then this is also performance. When I say ki you are different and I am different, why not do a performance of inclusivity then? There is no difference between you and I.
मतलब अपार्ट फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ ग्रुप्स का अदर करने के लिए, आई एम मतलब बारिंग ऑल दैट, आई एम सेइंग कि this is more beautiful in a way where you can inclusivity wala jo dance hai, I guess, मतलब where you just dance with yourself. I don't know, I'm still coming to terms with it कि कैसे है, how do I put it more coherently, how do I bind everything and then make it as an argument, or it has to sound academic also, obligation भी है, यूनिवर्सिटी वाले निकाल देंगे, बोलेंगे भाई तेरी लिखाई academic sound नहीं कर रही, तो Yeah, so all I that think is I also like what you did with the study of different kinds of literature. Can't really claim that I understood all of it because some terms were a little heavy, but I got the context of what you're saying. There is something that I personally have been lucky to do with Vipassana meditation as a journey itself. Besides the daily practice of things, which is the most essential part of what we'll end up doing at Vipassana, that's all. That's encouraged because you sit with your own mind and body, and every hour you spend on the cushion, you are a different person. It's a different session. Also, unfortunately, still is a different judgment. कि ये वाला दिन बहुत अच्छा हुआ, आज तो बड़ा ध्यान लग गया, आज तो नहीं लगा. So we are. I am still in that zone. Can't claim that I am out of it. But the repercussions that I see maybe might help you at some place. Is we like cause and effect in terms of direct TA. The problem is कि हमारा perspective limited है. इसी रोज मेडिटेट करता है इसलिए शांत रहता है, बट मुझे एज अ पर्सन सिर्फ यही दिखता है कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जाग ही रहा है. व्हाट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि ये पर्सपेक्टिव इसीलिए आया है क्योंकि वहां 1 घंटा बैठा है. जाग तो हमेशा से रहा था, आज वो फोकस में आया एज अ सब्जेक्ट, because now you're studying yourself कि what am I made of, like you said, you keep going back to that. वो essence है, instinctively तुम्हारे समझ में आ रहा है, बट जब भी कुछ ऐसा किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, अभी सडनली तुमने ये बोला और मैं गुस्से में कुछ बोल दिया, तो फटाक से सपोज देयर इज अ रिएक्शन इनसाइड, देन वो सब गया एसेंस साइड में. फर्स्ट आई हैव टू प्रूव माय पॉइंट. ये भी हम ही है, ये भी हम ही है, सही बात है. इंक्लूसिविटी में वो भी ऐड कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली वी वांट ओनली द नाइस पार्ट्स. वो कंपार्टमेंटलाइज से वापस वो कनेक्ट हो जाता है. True. My understanding so far, all the good things that I see in myself, good being quote unquote, मुझे लगता है कि अच्छा ये थोड़ा बेटर हो गया, ये थोड़ा ये नहीं. कल ही शाम को कुछ एक नए ग्रुप के साथ डिनर पे, like I said, I was there and I didn't use swear words as much, but the implication was almost like that. और मैं सोचा तुझे क्या हो गया आज, कैसे ऐसे बात कर रहे हैं, इतने दिन से तो शांत हो गया था, ये तो तेरे सपोजिटली अंदर नहीं था, अब यहाँ कंपैरेटिवली कम था, तो why were you trying to impress stroke entertain stroke be a comedian or whatever I was doing in that 1 hour 1.5 hours we were having dinner. So that was the question, and then I said वो question का आंसर जो भी है, first तो acceptance है कि this also is a part of you. You don't like to include that. The problem with this goodness thing is goodness tries to presuppose कि evil is outside. उसके बीच में right बैठा है. मतलब a monk has given a very good example. He says when you are working with your mind, it's like keeping a single chair in the room. Okay, if the chair is occupied by your mindfulness, so you are aware of every guest, which is every thought which comes to your mind. You're just aware. You've already occupied it with mindfulness, so that thought will not overtake you. The moment you let mindfulness go away, any of them can sit. So whether it is good or evil, it does not impact you. So it's a very interesting way to look at oneself and say कि नहीं ये भी एक part है मेरा, ये भी एक part है. When you're studying, demarcation is not important. Initially, though, it's not important. I think demarcation has its uses when you're stating your argument. So you need to define ये इतना definition है, इसके साथ ये भी है, but they will all interlink, they will all interject at some point, which is something most professors don't seem to like.
एंड दे आर नॉट रॉन्ग आइदर. मतलब वो पूरी एक जिंदगी चले एक तरीके के सब्जेक्ट में, उनको सडनली बोला कि लिटरेचर और फिजिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, तो गले से उतरना बहुत इजी नहीं है. बट आप सही बोल रहे हो. जो सेंट्स है, जेन मंक्स है, यहाँ जो पागल लोग भी हैं. अभी फ्यू डेज बैक में एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हैपेंड टू मी. देयर इज वन गाय हु इज साइक्लिंग ऑल डे इन माय कॉलोनी and he collects garbage and he's carrying that garbage with him, and it can be anything, plastic but buckets, plastic bottles, पता नहीं कुछ भी होता है. And he's carrying that full day. He's an old guy. I feel really sorry because उसका mind कुछ होगा जो ये करता रहता है. तो उस दिन I was having breakfast on the road and he came and he started talking to me and he said something very ऐसा हटके. He said कि Vaheguru said that wearing clothes is a no-no. Looking at him and then he said कि अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग प्रॉब्लम में डाल देंगे तुमको. अरे this is a very wise thing to say. I just kept looking at him and I pointed out, do you want to have breakfast with me? He says yes. And then he comes and he doesn't have a cycle with him. I'm wondering where is his cycle? Where is his kachra? He has nothing. He just comes and he sits with me. He had kachra. He kept it aside and he came and sat with me. He's having this, and then I went back. I paid. Then I went back to my bike. He says, "ध्यान से चलाना बेटा." I'm thinking he's a normal guy, man. He thanked me for breakfast. He was talking about some social issues that people are. He said another wonderful thing he said is कि छीन के कभी नहीं खाना चाहिए. मांग के खा लो, मांग के ले लो जो भी चाहिए. किसी का बिना पूछे उठाने का नहीं. यार ये तो मतलब बंदा इज लाइक एक स्टेप आगे है पीछे. बट इमेजिन एंड ही डज दिस. उसके बाद फिर से दिखा साइकिल पे ये कचरा उठा के घूम रहा है और घूमता है पूरा दिन. कुछ ऐसा क्या करता है पता नहीं, कहाँ सोता है, क्या होता है पता नहीं, बट वो दिखता रहता है. एंड आई फील स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स पीपल हु आर लिटिल ऑन द बॉर्डर, बिकॉज यू फील कि यार पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या तकलीफें हैं. बट लुक एट दिस. How do you define a guy like this? In material terms, या बाहर से देखोगे तो you want to specify कि पागल है. Even the sentence he said कि बिना कपड़े घूमना चाहिए can be construed as a madman's ये. But how do you, बाकी जो उसने बोला and the sense of peace that he exuded while saying it, he's at peace with himself. He's not like trying to come and fight with you or anything. वो मतलब madman है but उसकी दुनिया में वो complete है. तो कभी लगता है कि सारा वो अपने से तो आगे है एक्चुअली. हम थोड़ा इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जो ये बहुत सारा स्टडी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसको बड़ा बना रहे हैं. It just falls in place. That falling in place we are trying to study because we are trying to give it a name. तो मेरा I want to now come to a question here. Do you have friends or have they all given you up? Do I have friends or all have they given me up? I have friends, I guess. I have friends. Yeah, not yet. They haven't. हाँ मतलब I'm still wondering मतलब what मतलब why would they give up on me? मतलब I'm just trying to further the argument कि अगर if they would, then why would they? And why haven't they yet given up on me? So Okay, what is it? I can contextualize it for you because ऐसी बातें हाँ. एक तो बड़ी गहरी फिलोसॉफी लगती है. यहाँ तो लगता है कि पागल हो गया ये, मतलब go out, get a job and start making money. मतलब I'm presuming you're married if I remember correctly, what or no? I'm not married yet. मतलब You have a partner. So I am with my partner. When I met Renuka, I was with my partner. She lives in Bombay. हाँ